Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing well at home. Well, I'm your English teacher, Miss Aram Naz, and today we are about to start an online video lecture. जिस तरह आपको पता है कि गवर्नमेंट ने हमारी छुट्टियां अनाउंस कर दी हैं, 50% सॉरी हमारी अटेंडेंस होगी बच्चों की। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले आपको ग्रुप्स में वीडियो लेक्चर्स दिए जाते थे, ग्रुप ए एंड बी, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। तो ये आप लोगों ने सब ने करना है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन आवर टुडेज वर्क. So this is an important message that group A will do this homework on Tuesday and group B will do this homework on Monday. So let us begin our today's work. Today we will do the comprehension passage. See, so what we'll do, we will read the comprehension passage and it is pasted in your English homework copy. This is your English homework copy. You all know very well. Now open it up. G students, so you can see this page on your English homework copy. This is a comprehension passage. Before beginning, make sure that you write the date and day, your name and class section on this page, okay? So let us begin our today's work. Read the comprehension passage and answer the following question. Tom is a black cat. He lives in a house. He drinks milk and eats cat food. Sometimes his master gives him fish. After each meal, he licks himself to clean his fur. Tom is a little cat, and his master calls him Kitten. Tom loves to play with the ball of yarn. He pretends to see a rat, and he runs to catch it. He meows when he is hungry and purrs when he feels happy. Tom is a happy cat, and he purrs a lot. आपने इसको 2 से 3 दफ़ा इस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को रीड करना क्लास 2. इट्स वेरी इजी एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ओके. सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. हु इज टॉम? सर्कल द पिक्चर ऑफ टॉम. अब आपने जो ऊपर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पढ़ा था, आपने गौर से सोचना है और थिंक करना है दैट टॉम इज़ अ बियर, अ कैट, अ फ्रॉग और अ हेन. सोच के आपने इसको सर्कल करना है. देन व्हाट यू विल डू, गेस ट्रू और फॉल्स. यू विल रीड दीज 5 सेंटेंसेस वेरी केयरफुली. और अगर आपको कुछ इस सेंटेंस में डाउट होता है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल रीड दैट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज अगेन एंड देन सी दैट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ठीक है, फिर आपने वो ट्रू और फॉल्स इस कॉलम में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन टॉम डू? चेक द करेक्ट बॉक्सेस. टॉम जो है वो क्या क्या कर सकता है, वो इसी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में आपको मिलेगा. यू हैव टू थिंक केयरफुली एंड देन टिक दोज वर्ड्स जो टॉम कर सकता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज टॉम लाइक्स टू ईट? सर्कल द पिक्चर्स. बिल्कुल आपको अपने अगर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज अच्छी तरह रीड किया है 2 to 3 टाइम्स, तो आपको पता चल जाएगा कि टॉम को क्या क्या खाना पसंद है. आपने उन पिक्चर्स के गिर्द दायरा यानी सर्कल लगाना है. ऑल राइट.